Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Okay, guys, our new topic is work. Today, I will talk about work. So, basically, what is work? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है. सो वर्क हमारे पास क्या होता है, नाम से जाहिर है कि कोई भी काम कैसे. वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force moves the object at certain distance. So क्या लिखेंगे हम, work is done on an object. Work is done on an object when a force. Work is done on an object when a force moves the object at certain distance. So guys, हमने क्या लिखा, work is done on an object when a force moves the object at certain distance. वर्क कैसे होता है, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर कोई काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाता है, तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वहाँ पे क्या डन हो रहा होता है, वर्क डन हो रहा है. ठीक है. अब जो वर्क हमने किया है उसकी जो क्वांटिटी होगी, जो उसकी अमाउंट होगी, हम उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन can be calculated easily, for example with the help of formula, with the help of calculations. Okay guys, so the amount of work done can be calculated. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म. पहले हम लोगों ने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन. नाउ हम देखेंगे मैथमेटिकली और फार्मूला किस चीज़ का, वर्क का. ठीक हो गया. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कॉजेज द मोशन एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स एक्ट. क्या कहता है कि वर्क किस चीज़ के ऊपर, दो चीज़ें हो रही है, फोर्स एक्टिंग मोशन एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स एक्ट. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ. ठीक हो गया. इसको हम वर्क को हम टॉ थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक हो गया. फार्मूला हम लोग देखते हैं फोर्स का, वर्क का. हम लोग इसको, और वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी. यहाँ पे हमारे पास जो एफ होगा, इसको हम एफ कॉस थीटा डॉट डी भी कह सकते हैं. ठीक हो गया. यहाँ पे हमारे पास जो डबल यू है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वर्क डन. जो भी वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ कॉस थीटा इंटू डी. हमारे पास एफ इधर क्या है, डबल यू, वर्क डन. F is the magnitude of force applied. What is F? Students? Magnitude of force applied. And now D theta. What is the theta? Magnitude of displacement in the direction of force. उस चीज़ का मैग्नीट्यूड जिसकी जो कि फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है, उस चीज़ का मैग्नीट्यूड. उसके बाद डी थीटा हो गया. उसके बाद हमारे पास जो सिर्फ थीटा है, थीटा एंगल है. थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. कौन कौन से वेक्टर्स, एफ एंड डी. इनके दरमियान में जो हमारे पास है, ये एंगल बना रहा है. ठीक है, समझ आ गई आपको यहाँ तक. उसके बाद नेक्स्ट हम जो चीज़ देखेंगे वो हमारे पास आ रही है यूनिट. वर्क की यूनिट है हमारे पास जाउल. वर्क की यूनिट क्या है, जाउल. एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 1
न्यूटन मीटर। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि जूल क्या होता है। 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू मूव एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया। साइंटिस्ट यूज द जूल टू मेजर द वर्क। ओके, नाउ what is the types of work? Basically there are three types of work. Three types आ गई हमारे पास। One is positive work, negative work, and third one is zero work. So how many types of work? There are three types of work, that is positive work, negative work, and zero work. The nature of work depends on the angle between the force and displacement. As we have already discussed, that the nature of work depends upon the angle between the force and displacement. So now we talk about the positive work. So what is positive work? Guys, as we have discussed in our definition, the work is done on an object when a force moves the object at certain distance. So we say that what will be the positive work? The positive work if the applied force displaces the object in its direction, then the work is known as positive work. So now we talk about the negative work is totally opposite to the positive work. That is the if the applied force displaces the object in its opposite direction, then we said that the work is known as negative. When the work is done in its direction, wherever the force is applied, whenever the force is applied in that direction, the object will move, then that work is positive. And if it is in opposite direction, then the work is known as negative work. But now if the force and displacement act in the perpendicular to each other, force and displacement both act in the perpendicular to each other, then the work is known as zero work. Then there will be no work. Okay guys, now we talk about dimensions. Then what is the dimension of work? That is meter length square per t square. Understand? That is meter square और ज़ाहिर सी बात है, जब डिवाइड में से पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड से जब पावर ऊपर जाती है तो वो इन्वर्स में आ जाती है, बिकॉज पहले पॉजिटिव में थी, अब वो नेगेटिव में आ गई। ओके, क्लियर गाइस? समझ आ गई आप लोगों को? The work is done on an object when a force moves the object at certain distance. मैथमेटिकली जब हमने इसको देखा तो हमने कहा कि वर्क जो है वो कहाँ पे है? फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट है। इसका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, वर्क कहलाता है। वर्क को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास जूल है। एंड वन जूल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू मूव एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. So next we talk about the types. There are 3 types of work: positive work, negative work, and zero work. Okay, then we talk about what is positive work. The positive work when an applied force displaces the object in its direction of force.
in x direction, then the work is known as positive. And if the applied force displaces the objects in its opposite direction, then the work is known as negative direction, negative work. And then we talk about zero work. If the force and displacement act in the perpendicular to each other, then the work done is known as zero work. Okay guys, please like, share and subscribe my video.